Good morning. I am Dr. Dilip Kumar Kandar from Kandar Diabetes Center, Chief Consultant, Diabetologist and Podiatric Physician. आज आप लोग के सामने जो टॉपिक्स मैं बोलने चाह रहा हूँ दैट इज कॉल्ड इंसुलिन पम्प. इंसुलिन पम्प it is a gold standard treatment for type 1 diabetes. In the same times, we can consider in type 2 diabetes also. But before going for details on that insulin pump, first of all, I would like to tell about something called why that insulin pump is important, because इंसुलिन हमारा जब डायबिटीज शुरू होता दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन इधर डेफिशिएंसी कम के वजह से और बिल्कुल कम नहीं करते इसके वजह से. तो जो टाइप 1 जब डायबिटीज होता है तो बॉडी में जो इंसुलिन तैयार होता फ्रॉम दैट बीटा सेल, ये इंसुलिन बिल्कुल तैयार नहीं होता फॉर द टाइप 1 डायबिटीज डे 1 से. लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो एडल्ट एज में होता, यूजुअली मोर देन 25 ईयर्स और 35 ईयर्स जो डायबिटीज होते, उनको इंसुलिन रहता लेकिन सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहता. तो डायबिटीज का मेन रीजन जो है बॉडी में जो कॉज जो बोलते दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन इधर कमी के वजह से हो रहा है और नहीं तो फंक्शन कम नहीं कर रहा है उससे वजह से होता है. तो बॉडी में जो इंसुलिन तैयार होता ये दो फेज में तैयार होता. एक को स्लो फेज बोलता है और एक रैपिड फेज बोलते हैं. जो स्लो फेज मतलब है जब इंसुलिन हम लोग खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं कंटिन्यूसली इन 24 आवर्स एट मिनिमल रेट ऑफ के हिसाब से इंसुलिन तैयार होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए जब खाना खा लेते तब शुगर लेवल बढ़ जाता. फॉर इवन इफ इट इज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो शुगर लेवल बढ़ जाते. तो वो शुगर लेवल को कम करने के लिए और टू रिड्यूस दैट और टू कीप विद इन द नॉर्मल लिमिट, वो टाइम में बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत पड़ता टू ब्रिंग डाउन द ब्लड शुगर, जिससे वजह से उसको रैपिड फेज इंसुलिन मतलब बीटा सेल्स जो हमारा पैंक्रियास का अंदर एक ऑर्गन है पैंक्रियास बोलते हैं, उसका अंदर जो बीटा सेल रहता वहाँ से इंसुलिन एक्स्ट्रा रैपिड फेज में तैयार होता है. तो जिससे वजह से खाने के बाद जब शुगर बढ़ जाता तो उसको कम करने के लिए. तो अभी टाइप 1 में क्या रहता था, टाइप 1 में जैसे बोले कि टाइप 1 डायबिटीज मीन्स इन द चिल्ड्रंस, तो दोनों रैपिड फेज एंड द स्लो फेज दोनों ही बंद हो जाता, इंसुलिन तैयार नहीं होता. एंड टाइप 2 में दोनों रहता लेकिन शुरू में कम होता, इन द सेम टाइम्स इन द डिले रिलीज होता, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता, खाने के बाद भी बहुत देर के बाद इंसुलिन तैयार होता एंड वो भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता. तो अभी मैं जो टॉपिक्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ दैट इज कॉल्ड दैट इंसुलिन पंप. एक्चुअली इंसुलिन पंप इसको और भी हम लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पैंक्रियास, मतलब बॉडी में जो पैंक्रियास इंसुलिन तैयार होता है इन द सेम सिस्टम में जो मशीन है, मशीन से इंसुलिन तैयार होता देते रहता, डिलीवरी होता इन आवर सिस्टम. तो ये इंसुलिन पंप जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ दैट इज सिंस 2004 से इंसुलिन पंप मैं मेरा अपना टाइप 1 डायबिटीज को यूज कर रहा हूँ. इवन इफ इट इज अ टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो आई एम यूजिंग फॉर दैट इंसुलिन पंप फ्रॉम 2004. And they are now, they're grown up, they're settled in that various parts of that country in my type 1 diabetes. But today's what I'm going to tell about that, why that importance of that insulin pump, because that is because of that so much rapid development
in that science development in this message. आज जो इंसुलिन पंप के बारे में बोल रहा हूँ, द न्यू machine which has come, that is called Minimed 780G insulin pump system. So the Minimed 780G insulin pump is called, it is mainly focused on your life and not your that glucose levels. That is most important. Is called that insulin. I'm talking about that this insulin pump and with that device. So what is the advantage of this? Because this will exactly work as a normal pancreas level, as long as you are using insulin pump along with, we call that sensor, along with that sensor when you are using that, that is exactly that pump will work. This pump delivery systems, it anticipates the blood glucose levels in your ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब आपका शुगर लेवल ज़्यादा होने से भी उसको मालूम होता, लो जब होते हैं वो टाइम में भी उसको मालूम हो जाता है. इन दैट नॉट ओनली दैट इट एडजस्ट दैट ऑटोमेटिकली, जब शुगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा इन्फ्यूज करता सिस्टम का अंदर, जब कम हो जाता तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन लेवल कम हो जाता है एज पर द नॉर्मल सिस्टम. इन द सेम टाइम्स इट करेक्ट्स, मतलब शुगर जब ज़्यादा होगा तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा देके शुगर को कम कर देंगे, एंड जब शुगर लो हो जाता तब इंसुलिन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता. तो इसमें प्रोग्रामिंग है, हम लोग इनिशियली प्रोग्राम कर देते. इनसे पहले जो है दैट वाज एक्चुअली इन दैट मैनुअल सिस्टम. दैट मीन्स अपने आप हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है. दैट प्रोग्राम one in the same manner, we call that bezels at the rate of the bezels in the same times in that rapid phase. The bezels may be what is called that multiple phase manner में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. वो बेजल इंसुलिन मतलब हम समझो डे टाइम में at the rate of 1 unit is required, in the night is required say the 0.5 unit per hour insulin required. So everything we can make it as per the patient's requirement. Study करने के बाद हम decide करते हैं. In the same times we call that carb counting. As per that carb counting also, that bolus level also you can decide that. But once they fix the program, then patient has to patient को अपने आप dose just like a mobile here, that dose like a in case if it is a morning is required, say breakfast time is required 5 or 10 units, so the patient has to put the 10 units, and the lunch time if it is 2 units, patient has to put the 2 units, same kind of thing. But these machines, we call that 780G system, that Minimed insulin pump, that is called automatically. That if the blood sugar level is high, that sensor will display that. Here will display, suppose here will display that 180, 200 blood sugar or 300 blood sugar. That pump will automatically infuse that insulin in your bodies, and the blood sugar level also will that come down. So this is a very good invention for the management of the diabetes, especially in the type 1 diabetes. It's not only that type 1, even the type 2 diabetes, though can able to afford this system, I think that improve the quality of life. This is the most important thing, that the reason that we call that focus on your life. That means that wherever you want to go, you can use, you concentrate your life, you concentrate your, what is called the lifestyle, and that aim, focus. And that not only in blood sugar levels, because the blood sugar levels will be controlled by your machine. We call that Minimed 780G. With that, today I close that points. Further, anything doubt about that insulin pump, please let me know that, because I have a good experience and a good number of patients, as I mentioned about that. Last, 2004 onwards, I'm using that insulin pump to my patients, so that I have a good experience. मैं दिखा रहा हूँ इंसुलिन पंप कैसे किधर यूज कर सकते हैं हर जगह में. दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द स्विमिंग और द नॉर्मल एक्टिविटीज, और लाइक
walking, so that time also can be used. And it's also, it will like any times in the day, in the 24 hours, everywhere you can use that. And I also show you that our patients where that use as a. Thank you.